हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड कप कहानी, जिसमें हम डाइसेक्ट करते आ रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। आज के एपिसोड किस वर्ल्ड कप पे होगी और हम क्या बात करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है कहने की। बट हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या हालात थे और क्या हुआ। बट सबसे पहले मैं अपने दोस्त, हमारे जो पैनलिस्ट हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर तज्जिया निगार हसन कुरैशी को दावत दूंगा शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अवाद लाला, थैंक यू। आपने सीनियर कह के दाढ़ी को क्लियर करा दिया। जस्ट आई थिंक I've really enjoyed our session so far. I've loved the fact that we've gone and talked about all these World Cups, and obviously हम दोनों के लिए और हम ज्यादातर व्यूअर्स के लिए पाकिस्तान की जो सबसे ग्रेटेस्ट आई थिंक आज तक की क्रिकेटिंग या स्पोर्टिंग अचीवमेंट है उस पर आज बात करने जा रहे हैं। सो there's a lot of nostalgia, lot of excitement, really looking forward to it. बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जिस तरह की, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो हम 79 से 87 तक बात कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 1992। इट्स अ स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड टू, जिस तरह इन्होंने कहा हमें, हमारे भाई ने कहा कि सबसे बड़ी हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। सो वी हैव डिसाइडेड कि 92 के वर्ल्ड कप को डिटेल में डाइसेक्ट करें, एज इफ कि आज तक पाकिस्तान उन्हें नहीं किया, या हम ये रोज नहीं करते, लेकिन हम फिर भी इसमें कार्य खैर में अपना हिस्सा डालेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या थे 92 के वर्ल्ड कप तक जो हमारे चल रहे थे। इसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे अंदाजा हुआ, जिस तरह हम देखते आ रहे थे कि आमतौर पे खैर क्रिकेट कम होती, फिर ज्यादा होनी शुरू हो गई, फिर वेस्ट इंडीज का डोमिनेंस का टाइम आया। 87 के वर्ल्ड कप से लेकर फाइनल से 92 के पहले मैच से पहले तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक्चुअली सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है ऑफ दैट एरा। सो वी हैव सीन, जिस तरह पिछले एपिसोड में बात करते आए थे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम बन रही थी, बट कुछ उसमें कमियां थी जो पर एप्स खान साहब ने फिर उसके बाद उनको एड्रेस किया और उनको पूरा किया। सो इन दैट एरा वी बेसिकली प्लेड 79 मैचेस, 143, लॉस्ट 34। ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी टीम थी इस एरा की, करंट वर्ल्ड उस टाइम के जो करंट वर्ल्ड चैंपियंस भी थे वो, और फिर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। सो जो टॉप तीन चार टीमें थी वो थी, एंड इंडिया वाज नॉट दैट बैड आइदर, वो भी नंबर फिफ्थ के ऊपर थे। सो दिस वाज जस्ट एन इंटरेस्टिंग ओवरव्यू। इसके अलावा 92 के वर्ल्ड कप पे डायरेक्ट जंप करेंगे। पहला वर्ल्ड कप था जिसमें डे नाइट मैचेस हुए। पहला वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में खेला गया। पहला वर्ल्ड कप था जहां पर आपको ग्रीन किट्स, यानी सॉरी ग्रीन किट्स, कलर किट्स नजर आई हमारी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक किट एवर, जो आपको नजर भी आ रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर। वो पहली दफा हुई और फ्लड लाइट्स मैच हुए। कैरी पैकर सीरीज का इम्पैक्ट भी जो है वो हम लास्ट टाइम डिस्कस करना भूल गए थे, बट हम उसको भी देख रहे हैं कि जो चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी उसका हमें फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट नजर आया। सो वर्ल्ड कप में क्या हुआ उस पर आगे चलते हैं, बट स्क्वाड से बात शुरू करते हैं। इस दफा का जो स्क्वाड था वो आपको कैसा लग रहा था, किस तरह का इंतजाज था? आई थिंक लाला उस पे जाने से पहले सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, दिस आल्सो द फर्स्ट वर्ल्ड कप विद साउथ अफ्रीका, जिसकी वजह से Yes. फॉर्मेट चेंज हो गया था। 9 टीमें बन गई थी, रिटर्न ऑफ साउथ अफ्रीका टू द वर्ल्ड कप। उसके अलावा जो जैसे आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया था कि हम जितने मैचेस 34 मैचेस हारे थे, उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसमें से 20 तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से हारे। सो योर ओवरऑल रिकॉर्ड अगेंस्ट द अदर टीम्स वाज प्रीटी गुड, एंड द रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया इन दिस टाइम, Yeah. you played them in 12 games, you won 9 of them, was very good. स्क्वाड पे अगर मैं आपकी बात पे आता हूँ, आई फील दिस वाज स्क्वाड वेरी मच इन खान साहब इमेज। सबसे ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्शियल बात थी कि इनिशियल स्क्वाड में जावेद मियांदाद साहब नहीं थे, Yeah, that विच नहीं वी थे। कैन नॉट इमेजिन। देयर वाज अ लॉट ऑफ उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मेरे खिलाफ एक साजिश थी। उन्होंने लिखा कि जब मैं नेट्स में आया तो मुझे सिर्फ शॉर्ट बॉल कराई जा रही थी, मैं स्ट्रगल कर रहा था एक इंजरी के साथ, बट आई न्यू आई बी एबल टू डू इट। तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। फीलिंग थी कि जब हम वहां पे पहुंचे और हमने स्टार्ट किया तो हम तो साइड टीम से भी हार रहे थे, उनकी ऑलमोस्ट आप कह लें ग्रे टीम से भी हार रहे थे। तो फिर मियादाद साहब को एक एसओएस किया, बट आई थिंक इट वाज द लास्ट टाइम वी हैड a really good mixture of experience and a really good mixture of youth. अगर आप देखें तो one of the most interesting things is कि the age difference between your eldest player and your youngest player was 21 years, खान साहब और जाहिद फजल के बीच में, which is quite a lot even by Pakistani standards. And there were some interesting selections, one would say, going with two leg spinners. इकबाल सिकंदर भी थे जो डोमेस्टिकली अच्छा खेल रहे थे। अब्दुल कादर को नहीं लेके जाया गया, जिसपे बहुत सारी बात की तनकीद हुई थी, बट खान साहब फेल्ट दैट ही वाज नॉट the force that he used to be. Another big surprise was the inclusion of Wasim Haider. Wasim भाई के साथ मैंने माजी में ही सदर्न पंजाब में काम किया, इज एन इनक्रेडिबल कोच नाउ, बट उन्होंने अपनी जिंदगी के वाहिद मैचेस उस वर्ल्ड कप पे ही खेले, उसके बाद वो कभी खेले ही नहीं।
And I believe, his second and last match was against India, and then he never played. Zahid Fazal को लेके गए. Amir Sohail was one of the revelations of the tournament, but a lot of us felt that Saeed Anwar should have been there. तो काफी इंटरेस्टिंग आपका जो स्क्वाड का मेकअप था हमाद लाला, और आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज था हमारे लिए. Obviously, the worst thing for us was the fact that Bakar Yunus was injured on the eve of the World Cup and not part of things. So that was probably the big hit, and I think many Pakistanis felt कि अगर Bakar fit होते तो we would have probably had a much easier route. But then Pakistan, we don't like doing easy things. So जब तक सारी आवाम को टेंशन नहीं देनी तो फिर क्यों करना है. इसमें एक हमेशा मेरा ख्याल है उनको तो खैर फॉर श्योर अफसोस होगा, बट सईद अनवर और कार यूनिस मिस्ड आउट on winning a For World sure. Cup. क्योंकि उनका probably not the only chance. They did get a chance in 1999, but उसको हम अगले Missed out एपिसोड on में जो that है too. वो थेरेपिस्ट के साथ बुला के फिर हम डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बुला के. बट स्क्वाड की हमारी बात हो गई है, पुराने लोग भी हमारे साथ हैं. मोइन खान जो है वो वर्ल्ड कप में आ गए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज प्लेइंग वर्ल्ड कप एज वेल. जिन्होंने बड़ा I क्रूशियल think पार्ट प्ले किया. I think Moeen, Inzamam, and Mushi benefited from the fact that they played the first ever Youth World Cup in Yeah. Australia. जो हम फाइनल में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया से हार, and gave a very good account of themselves. And the way Khan साहब backed Inzi and Mushi and Moeen, the way उनको वो श्रीलंका सीरीज जो हमने लास्ट सीरीज थी होम पे खेली before going to the World Cup, और उसमें ना सिर्फ इंजी ने मुल्तान में अपनी पहली करियर की 100 की श्रीलंका के खिलाफ, उसके अलावा उन्होंने अपनी पहले ओवर में ब्रायन लारा की विकेट ली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ. सो खान साहब वाज प्रमोटिंग दीज यंग फेयरलेस क्रिकेटर्स, and I think that's why we finally got to see when the crunch situations came, the fact that you had the incredible experience of Imran Khan and Javed Miandad. You had Wasim Akram, who was, I feel, hitting the best of his peak. That we are still वसीम भाई की पीक इतनी लंबी थी कि लोग भूल जाते हैं कि क्या 1988 उनकी पीक थी, 89. I think 88 से लेके I would say till about 2000 Wasim Bhai was at his peak. It's one of the longest peaks I've ever seen of consistent brilliance. And then a lot of young players coming through. So I think वो हमें बड़ा फायदा हुआ. और जब when the chips were down हमारे लाला, जब situation difficult हुई, तो I felt the fact that we had so many young players. I will say this, he's not popular with a lot of Pakistanis now. But Amir Sohail had such an incredible arrogance to him in that World Cup, and he had such an incredible edel to him that I think he was a very important part. Unka jo aggression thi was very important, and lest we forget, Ramiz Raja's contribution throughout that World Cup was nothing short of spectacular. So I think it was a lot of parts that all, when it had to happen, when it clicked, it all worked out. बेहतरीन. सो लेट्स मूव ऑन टू द मैचेस. इस दफा हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम मैचेस डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द 1992 वर्ल्ड कप. सो वी स्टार्टेड ऑफ pretty bad. हमने वेस्ट इंडीज से पहला मैच खेला. पाकिस्तान वाज ऑल आउट फॉर टू. सो पाकिस्तान ने 220 फॉर 2 किया. रमीज राजा हिट अ सेंचुरी इन 50 ओवर्स. अगेन ये भी हम बताते चले, इस लास्ट टाइम की तरह अब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स Yes. फॉर्मेट जो है वो परमानेंट हो गया था. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एनी मोर, बट इट वाज द स्टैंडर्ड. और वेस्ट इंडीज ने 221 विदाउट अ लॉस इसको चेज कर लिया हमें. इस पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके एक प्लेयर रिटायर्ड हुए थे. And What a Yorker. What a Yorker from Wasim Bhai to Lara. But by then, I think it's fair to say that सारा पानी जो है वो डैम में से निकल गया था. So, pretty deflating way to start things. And I think the West Indies का हमारे ऊपर एक mental edge था, which they really made count. And it was a disappointing way to start the World Cup. And at that time, I think obviously another big concern was that both the captain was struggling with injuries and the vice captain was struggling with injuries. So I think that maybe also played its part. Moving on to second match. Second match हमने वेस्ट जिम्बाब्वे से खेला. पाकिस्तान ने 254 किया. आमिर सोहेल ने सेंचुरी बनाई. जवाब में जिम्बाब्वे जो थी 201 बना सकी. पाकिस्तान ने मैच 53 रन से जीत लिया. वसीम भाई was economical as ever, 3 for 21, and he obviously played a big part in that match. But relatively straightforward victory थी. बाकी उसके बाद फिर हमारा मैच आता है, जिस मैच की जो बारिश है उसकी वजह से हमेशा हमें बारिश हमेशा अच्छी लगती है. आज तक अच्छी लगती है, जितने मर्जी मैच हम हार जाएं, लेकिन उस मैच में जो बारिश हुई थी उसने हमें वर्ल्ड कप जितवा दिया लिटरली. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. Pakistan all out 74 in 40 overs. Salim Malik was, the highest run scorer, 17 थे उनके. और जवाब में इंग्लैंड 24 for 1 था, जब बारिश को इस मैच दोबारा बंद करना पड़ा.
और नो रिजल्ट की वजह से हमें 1 पॉइंट मिला. इस पॉइंट की वजह से क्या हुआ इस आगे बात करेंगे, बट योर कमेंट. The irony of rain coming not to help the English, incredible. Absolutely incredible. And I think also incredible that this was Salim Malik's only contribution until the final in the World Cup. And final में बैट से contribute नहीं किया था उन्होंने. और चलें इस पे हम थोड़ा, आई वोंट बी वेरी हार्श के मे बी द ओनली कंट्रीब्यूशन अगले 3 वर्ल्ड कप में भी. बट मूविंग ऑन टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इंडिया से खेला और इंडिया ने 216 किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर वाज वेरी यंग एट दैट टाइम. ही स्कोर्ड 54 रन्स. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जवाब में 173 बना सका. आमिर सोहेल ने टॉप स्कोर 62 पे एंड इंडिया वन बाय 43 रन्स. व्हाट हैपेंड अला, हम क्यों हारे ये वाला मैच? लुक्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. I think one of the problems was that at that time we were really struggling overall. हमारी bowling नहीं click कर रही थी, हमारी batting का confidence काफी low था. India themselves actually at that time were looking pretty good. The only tough game that they'd had was another one-run loss to Australia. Other than that, they were looking good. So I think again this started a very long rut for all of us. 31 years, I would say, of Indian domination at ICC events, not including the Champions Trophy, at different World Cups, T20 or 50 over World Cup. And honestly, I think the only memory most Pakistanis have from that match is Javed Bhai jumping with Kiran More. I think हमारी और memories blocked out हुई हैं, and India started a trend where they just dominated us in the World Cup for 30 plus years after that. We were just not in the game. Mentally, I think we were somewhere else, and it was a pretty straightforward win for India, and Pakistan was not in the races for sure. टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक मूवमेंट्स, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हमारा नेक्स्ट मैच था. साउथ अफ्रीका मेड 211. सो अगेन वी वर नॉट चेजिंग like a huge total like 250, but Pakistan would make 173. but जो इसमें important था, हमारे टॉप स्कोर थे 48 पे जमामुल हक, वो रन आउट हुए थे और जॉन्टी रोड्स के वो जो पोस्टर हम सबके कमरों में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लगे रहे थे, इस मैच ने हमें कम से कम वो मोमेंट जरूर दी. And I think एंड it's also, sorry Lala, it's the fact that it's the very first match between Pakistan and South Africa. जो हम हारे, फिर उसके बाद हम अगले 6 जीते, फिर उसके बाद हमने कसम खाई कि इनसे कभी जीतना नहीं और अगले 15 हार. So I think again it was again where we got a bit unlucky with the rain rule, because हमारा target इस तरह से बन गया था. We saw Imran Khan साहब and Inzi put in a good partnership. But again, यहाँ पे अब I think आप उस stage पे पहुंच गए हैं that you've lost 3 games and only won the one and had a non-result, and now it's really do or die situation. And of course, the best thing is that the next game is against a team that has been dominating us our entire lives. So the biggest thing was, I think at that time, most of us would have written Pakistan off, because the expectation that we will beat Australia in the next game was unlikely. एंड लॉट ऑफ बुक्स में आपको चीज पढ़ने को मिलती है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली अपनी वापसी के टिकट्स कराने का बंदोबस्त शुरू कर दिया था एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इट वेरी अनलाइकली कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकेंगे. एंड वी हैड, सो नेक्स्ट मैच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान स्कोर 220. आमिर सोहेल, जिस तरह लाला बता रहे थे कि ही वाज अगेन इंस्ट्रूमेंटल, 76 किया इन्होंने. स्टीव वॉ अगेन परफॉर्म करते रहे हमारे के 3 for 36. Australia was all out for 172. Akif Javed led the attack with 3 wickets, and Pakistan won by 48 runs to keep their slim hopes alive for moving to the next stage. ओके जी, हमारा नेक्स्ट आता है. नेक्स्ट हमारा जो फेवरेट काम है वो है श्रीलंका से खेला. हमारा श्रीलंका से हमने दोबारा खेला. श्रीलंका से हम मैच खेल रहे हैं. 216 किया श्रीलंका ने. पाकिस्तान वन बाय 4 विकेट्स. मियादाद स्कोर्ड अ 57. एंड देन केम द लास्ट मैच. अब इस मैच पे हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें मैच जीतना बड़ा जरूरी था, और ये मैच अगेंस्ट है न्यूजीलैंड, who were unbeaten at that point. Seven wins in a row. 7 wins in a row and beaten everybody. And a lot of people say कि उन्होंने वो match seriously नहीं लिया. I doubt that. New Zealand was a side that believed in momentum, and the fact that we were able to go into such a pressure match and put in such a dominant performance was a shock. It was like looking at a completely different team को आप देख रहे थे. जिस तरह राजा साहब ने आके पहले 100 की, फिर वसीम भाई ने अपनी विकेट्स ली, तो हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक था, not bad. But I think given the context of the situation कि वो unbeaten थे at home and we went and beat them, and इसके साथ एक और बड़ा important match आता है लाला, which is Australia versus West Indies. Because अगर वेस्ट इंडीज वो मैच जीत जाता है, पहली दफा मैंने जिंदगी में जब देखा
हमारी आवाम को क्रिकेट के लिए दुआ करते हुए, and it's been a recurring theme since then. So I think that the fact that Australia made sure that they wanted to finish their World Cup, they were both the hosts and the champions on a high. I think इंग्लैंड के मैच के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज था, बिकॉज उस मैच की वजह से आप क्वालिफाई किए. एंड आई थिंक एट दिस टाइम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, none of them are looking at Pakistan as a genuine threat, simply because of the fact that we snuck our way into the semi-finals. और इसमें से हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे. न्यूजीलैंड में फिर हमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड नजर भी आई, इवन दो कि इस मैच में दे वर आउट फॉर 166 एंड वी वन बाय 7 विकेट्स, but they came back strong in semi-final. And if it was not up to Inzi bhai, they could have played the final easily. Yes, and I think the fact that Martin Crowe got injured while he was batting, otherwise Yeah. if Crowe was on the field, it would have been a very different. देखें, हमारा जब आपका लिखा होता है तो आपका लिखा होता है. It wasn't meant to be for New Zealand. In fact, I think there's no team that they hate playing in semi-finals more than Pakistan. But it was just the most incredible performance. अगर हम उस semi-final के ऊपर आते हैं तो पहले the way New Zealand started, the way they played. Martin Crowe is someone जिसको मैंने हमेशा देखा है हमारे सारे टॉप प्लेयर्स को कहते हुए कि he was as good as anyone that they ever played. वसीम भाई, वकार यूनुस, इमरान खान, अब्दुल कादिर, they all said Martin Crowe was one of the greats, and I think he played one of the greatest innings ever played in a World Cup match. If it wasn't for his injury, it would have been very difficult. And then the fact that we came in from a tough situation, we saw the captain take the lead. खान साहब ने अपने आप को प्रमोट किया, 3 पे बैटिंग करने आए. हमने उनको और जावेद साहब को एक पार्टनरशिप करते हुए देखा. जावेद साहब को देखा कि वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे. फिर जब सिचुएशन आई तो आई थिंक उस टाइम पे हमें तो बिलीव ही नहीं करते थे कि आप 25-30 बॉलों पे हाफ सेंचुरी कर सकते हो, लीव अलोन टू मेक द रन्स द वे इंसी डिड. एंड वेल नोन फैक्ट फॉर दोज ऑफ यू हु जिनकी मेरी तरह कोई जिंदगी नहीं है और सारा दिन क्रिकेट के बारे में पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि इंसी हैड अ फीवर द नाइट बिफोर एंड वाज अनविलिंग टू प्ले द गेम एंड नॉट वेल. And Khan Saab told him, you'll rather die out on the field than not play. So to produce an innings like that, under pressure, and then go out and do it, and then we of course saw the most incredible finale to the game. जो आप कहते हैं बिल्कुल end में आके जो winning आपकी moments थी through Moeen Khan sweeping a fast bowler for 6. It was just incredible, and I think it was for New Zealand what it was for us in '87, losing to Australia. Because that was a team that felt they were probably going to go on and win the World Cup the way they played. And agar aap dekhein, so it was definitely a team that was greater than the sum of its parts, or led by a brilliant captain. And they were able to make the most of it. But Pakistan ka juggernaut jo hai is waqt tak lala ab wo uth chuka tha. And once you did that, I think you felt confident no matter who you would have played in the final. But as our luck would have it, rain this time came to England's defense. And we played England in the final. मोमेंटम की आपने बात की, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट, हम इस पे आगे बात भी करेंगे. बट मोमेंटम पाकिस्तान के साथ आ चुका था, जिसको फिर हमने फाइनल में बहुत ज्यादा नोटिस किया, फॉर दैट मैटर स्पेशली इन आवर फील्डिंग. अगर आप देखें हिस्टोरिकली जो हमारे फील्डर जो आमतौर पे नहीं परफॉर्म करते और जब पे था कि यार इनसे कैच तो हो ही नहीं सकता, 100 कैच आकिब जावेद डाइव करके पकड़ रहे हैं, सो मोमेंटम और रन आउट्स हो रहे हैं. इट वाज अनलाइक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरह की, बट अगेन दैट्स हाउ वी आर. सेकंड जो मैच था वो सेमीफाइनल हमारा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका हुआ, विच इज नॉट फेमस फॉर द बारिश एज वेल. उसमें हमें ये देखने को मिला कि एंड पे पहले 13 बॉलों पे 21 चाहिए था, देन इट स्कोर केम डाउन टू 21 ऑफ 1 बॉल, विच डेफिनेटली लेड टू अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई. और उसके बाद रूल्स भी थोड़े बेहतर हुए, चेंज हुए, एंड अब इवॉल्व होते होते चीजें बेहतर हो गई हैं. बट इट वाज अनलकी फॉर साउथ अफ्रीका जिन्होंने अपना अभी स्टार्ट किया था. And this was their first attempt, and they played the semi-final, almost made the final, and unfortunately वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनल खेलने का 50 ओवर वर्ल्ड कप में. Moving on to the final, Melbourne, 25th March 1992, Pakistan versus England. England being the top team, or if I'm not mistaken, they were unbeaten at that point. They had lost to Zimbabwe. And they had lost to New Zealand, but they were the form team because unki 2 runs thi. I think the fact when they beat Australia in Sydney, I believe, the way that game came, and the fact that they had done so well against us in the first match. So aapko pata hai, mashallah, Pakistanis and psychological scars jo hai hamari ek national hobby hai. So I think usme feeling thi. But in all honesty, Hamad Lala, I think when Khan Saab came out wearing that corner tiger shirt, it was over for the 3 Lions. It was over.
खान साहब आए और उन्होंने बस टीम को कहा आपने खेलना है जैसे आप मुझे पता है आप खेल सकते हो. And the fact that he felt that we were playing and told the boys to go out and play their game, and the confidence of Wasim, Inzamam, Javed Miadat to khair did not need Khan Sahab to give him confidence. The confidence of Mushtaq Ahmed, Akib Javed, Moin Khan, even Amir Sohail, who by his own standards had a pretty bad final, but the fact that he told Ian Botham to send his mother-in-law to Pakistan, I think is just goes on to show. And one of the best moments I'll always remember, नो बॉल में कैच हो के राजा साहब अपने सारे बोरी बिस्तर घोड़े बेच के चले गए और रन आउट होते होते बच गए. सो इंग्लैंड मेड एन इनक्रेडिबल स्टार्ट. डेरिक प्रिंगल वाज ऑलमोस्ट अनप्लेएबल एंड लेट्स बी ऑनेस्ट जावेद साहब वाज एलबीडब्ल्यू जो नहीं दिया स्टीव बकनर ने, जिसके लिए हम उनके आज तक शुक्रगुजार हैं. बट आई ऑलवेज लाइक टू से कंसीडरिंग वी वर चीटेड इन द वेस्ट इंडीज ट्वाइस बाय वेस्ट इंडियन अंपायर्स, so it all evens out. And then we just saw the rebuilding job from Khan Saab and Javed Miadat, the benefit of their experience, their mentality. Khan Saab hitting the only six of the game off Illingworth, and then just set up a platform. And then उस platform में Inzi and Wasim bhai just put the icing on the cake. And I felt we had a very good winning total when you consider our bowling lineup. And it was just the perfect end. And the fact that Salim Bhai came out and उन्होंने आते ही पहली बॉल पे वसीम भाई को रन आउट ही करा दिया, summed up his World Cup as a batsman for sure. But I think we were very happy because एक टाइम पे नहीं लग रहा था. Let's also not forget Khan Saab was dropped by his opposite number, Graham Gooch, I think of the bowling of Phil de Freitas also. तो काफी chances थे जो हमने फिर लिए और जो हमारे फायदे में गए. But for that era, a run rate of 5 and over was just the perfect total that we could have asked for, and then went into the England innings with a lot of confidence. इसमें you are totally right. वैसे तो आपने सारे sum up कर दिया है, but would you say again, अभी बात करते करते मेरे ज़हन में आया कि ये जो हमारा टेम्पलेट सेट हुआ था कि बीच में आपने अर्ली 2 विकेट्स हमारी गिर जाती हैं या गिर जाएंगी अगर, तो हमने बीच में 20 से 30 35 40 तक वी हैव टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म, जो कि हमें नजर आ रहा है खान साहब और मियां रिपीटेडली करते आए हैं. They used to take up that role, but now finally we had players like Inzamam and Wasim who were finishing the game as well, who were able to score 30 40 odd runs or 15 20 balls. बिल्कुल. आई थिंक प्लेटफॉर्म में आपको सबसे बड़ा फायदा ये था कि आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो थे they were able to give you something to work with, and now you were seeing the best of the attacking cricket that Khan Saab had championed. You were seeing Inzamam al-Haq with the late cuts, completely carrying on from where he went on. If you add up both his scores, he scored 100 runs when it mattered in the semi-final and the final aggregate. And just the confidence he brought in, and then Wasim Bhai coming in and just, smashing those boundaries, it really gave Pakistan the hope that you can go. And let's not forget, again, Derek Pringle came in the middle of all this madness and bowled a great over. Otherwise, Pakistan was probably looking at 260 plus because he came and picked up Inzi. He came and slowed down the runs. So the finish gave us a lot of momentum going into our bowling. अगर आप 220, 225 लेके जाते, आपको फीलिंग होती कि यार इंग्लैंड आर स्टिल इन इट. योर बॉलर्स may have done the job, but you just went into it with an incredible amount of belief, and I think that came from the platform set by Khan Saab and Miadat Saab, and then just the finishing touches by Inzi and Wasim. The fact कि मोइन खान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी लाला just goes to show you how well you did it. So the first question is now, did Ian Botham nick that ball? 100% don't care. Honestly, मैं बड़ा सोचता था, did he nick it, did he not nick it? He deserved to get out. I think the fact is, and मैं ये publicly इसलिए भी कहूँगा क्योंकि बोथम साहब ने मुझे ट्विटर पे बैन किया हुआ है, कि बोथम साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी थे. I say in English for anyone who's watching, I thought he was an incredible player. He was one of the greatest players of all times. But he's really let himself down as a human being. And the fact that his behavior, especially towards Pakistan, we saw later on, not long after, with his accusations against Khan Saab and all, maybe he didn't make it. But I do genuinely believe if he'd been a better person, it would have worked out for him. I think it was just karma having a go at him. And apparently he was very upset the night before because वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए एक इवेंट किया गया था, उसमें a gentleman had come in drag dressed as the queen and had a real go. We all know
Australians love the English. So he was not too happy about that also. So I just think unki entitlement or jo unki feeling thi, uske वजह से हुआ. But Lala, even if he didn't make it, Wasim Akram was going to get him very soon. So I don't know why he's complaining about it. He should get over it. So Ian Botham was the first wicket. Then we had Alex Stewart gone. फिर ग्राहम हिक को जो है आउट किया मुश्ताक अहमद साहब ने. फिर 4 for 69 पे ग्राहम हुच भी आउट हो गए. उसके बाद they started building a partnership which आपको lasted अगर for याद आपको जी अगर याद होगा तो एक तो एलेक्स स्टुअर्ट डिड निक इट बिफोर ही फाइनली निक्ड इट एंड रिफ्यूज्ड टू वॉक. एंड दैट वाज जस्ट अ सरील मोमेंट. मुझे अभी भी याद है कि बीच में थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी हमारी सबके फीड पे और वो साउंड भी नहीं चल रहा था और but he nicked it and he didn't walk and then Akif Javed bowled him an absolutely beautiful outswinger. Mushi's bhai's googly to Graham Hick will be the stuff of legend. I found it very strange England did not go with Robin Smith simply because of the fact that Robin Smith over the years was a very good player against Pakistan and one of the better players of spin. So I found their team selection on the day a bit surprising, maybe because of the loss to Zimbabwe. And then Akif Javed first with the outswinger to Alex Stewart and then with the catch of the century to get rid of Graham Gooch. And I'll never forget, मुझे उस गेम की कमेंट्री में कुछ चीजें आज तक नहीं लाइंस भूलती. And one was David Gower saying, that's one very happy man running towards 10 very other happy men. And मेरी बहुत अरसे बाद जब आकिब भाई से मुलाकात हुई तो उनसे मैंने पंजाबी में पूछा, मैंने कहा आकिब भाई वो कहते ना दसो, तो वो कहते हैं यार मैंने तो उसने भी नहीं समझ आई सी, आज भी नहीं समझ आई. It was just an incredible piece of fielding. And I think when those things happen, जैसे आपने कहा था, when those things are going for you in the field, then you feel it. But that was a very dangerous partnership between two very, very good players, Alan Lamb and Neil Fairbrother. And I think that partnership definitely gave them a lot of hope. इसमें बिफोर मूविंग दैट पार्टनरशिप ये जो आपने बात की थी जो डेव गॉवर का आपने किया कोट, मैं उसी पे आ रहा था. अगर हम हाइलाइट्स भी देखते हैं तो वो मुश्ताक भाई भी जो है वो खेल रहे हैं अपने हाथों के इशारे से. अगर आप बॉल करते हैं, बॉल स्विंग होती है, वो भी हाथों से खेल रहे हैं. सो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट बट हैप्पी एंड अटैकिंग माइंडसेट का स्क्वाड है. वो प्रेशर नहीं ले रहे. और मुझे याद है वसीम भाई भी कहते थे कि उन्होंने कहा था करो नो बॉल ना जिन्हें तुसी करनी है, लेकिन यू हैव टू अटैक अटैक अटैक. एंड इट वाज नॉट लाइक कि आपने आखिरी 5 ओवर उनको लेके आना है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. उनको 34th ओवर में आप लेके आए विद द सोल पर्पस कि आपने पार्टनरशिप ब्रेक करनी है. एंड ही इमीडिएटली डिलीवर्ड बिफोर मूविंग टू those balls. I remember Arvinda De Silva ने अपनी उसमें लिखा ऑटोबायोग्राफी में, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों बॉल्स देखी, स्पेशली जो सेकंड बॉल थी, और मैंने वो कम से कम 1000 दफा देखी हैं. बट मुझे आज भी यकीन है कि वो कोई प्लेयर दुनिया का वो बॉल नहीं खेल सकता जितनी मर्जी आप तैयारी कर लें. So your comments on those two balls? I agree. And I think the fact that he bowled those two balls, the fact that he bowled the ball that he bowled to Rahul Dravid in the test match, there's so many times Wasim Akram was able to do I just want to call it the undoable. जो आपको करते हैं अब वो एलन लैम को तो चले आपने वो आउटस्विंग से निकाल के बॉल मार दी. सेट बैट्समैन, a very dangerous batsman looking ready to take his side to victory in that stage. But if you're Chris Lewis and you're walking out to bat and you get that first up, I think Aravinda is absolutely right. Nobody can do anything about it. And the fact that, again, the most iconic piece of commentary is the great late Richie Beno saying, subtract Lewis from that list, Wasim Akram is on a hat-trick. So at that moment, to aapko pata tha, you saw the genius of the man, and you also knew the World Cup was pretty much yours. And I think दुनिया में आप कहीं देख लें, आपको किसी स्पोर्ट में ऐसी मोमेंट बहुत कम मिलेगी एक फाइनल में to put in two such deliveries. I think it's impossible to put it into words, honestly, what they meant. And the fact that he kept doing it 7, 8, 9, 10 years later just goes on to show you the level Wasim Akram operated at. एक और इंटरेस्टिंग जो इनसाइट रिसेंटली गॉट टू नो कि फेयरबदर और क्योंकि क्रिस लोग सारे काउंटी वसीम भाई बहुत खेलते थे, सो ही एक्चुअली वांट द इनकमिंग बैट्समैन कि यार वसीम भाई अब ये करेंगे. सो ही हैड सम आइडिया कि उसके साथ होने वाली है, येट ही वाज अनएबल टू स्टॉप द बॉल. Exactly. And I think bilkul because Neil Fairbrother used to captain Wasim bhai and he was worried about it. And I think honestly Don Bradman को खड़ा कर देते, maybe he's the only one who could have managed it, or Sir Vivian Richards. Most lower order batsman के लिए, which is what for all his talent Chris Lewis was, impossible.
So Wasim Bhai turned the game 5 for 141, 6 for 141. Then Neil Brother gave up at 180 for 7. और उसके बाद फिर आहिस्ता 183. Then they had a partnership of 208 run जहाँ पे रन आउट होता है सलीम मलिक और मोइन खान came together to run him out. And lastly, the last wicket, which is probably my favorite moment from the final, because it leaves a great man is leaving the stage with Yeah. final wicket with his final ball in international cricket. Imran Khan, Ramesh Raja catches, and Imran Khan gets the final wicket, and Pakistan wins the World Cup. Up in the air, he's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. And Bill Laurie is commentating. You can't ask for something more amazing. In front of 90,000 people at the MCG, Pakistan win the World Cup. And Bilkul, I think Khan Saab ke liye for his contribution to Pakistan cricket, for what he gave Pakistan cricket. He gave Pakistan cricket hope. He gave us belief. He gave us an attacking mindset. For your greatest ever player to finish his career. And let's not forget, Lala, he retired in 1987. So to come back and lead this team, and he was struggling with injury. He was in the twilight of his career, 41 years old. For context, I'm 42 years old. And I'm not saying कि खान साहब के कभी इतने बुरे हालात थे जो मेरे हैं. But just to come back and take on the world's best teams and lead a team that everybody had written off after 5 games. It was just a fairy tale ending for a man who deserved it for everything he did for Pakistan cricket. And Ramesh Bhai taking that catch, and I think we've seen some great moments. आपने और मैंने 2009 का वर्ल्ड कप भी देखा, आपने और मैंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी देखी, but nothing will ever beat the 1992 World Cup, and it just gave Pakistan that incredible joy. And should we not be forgotten that at that time, Pakistan, within the next couple of years, were also world champions in hockey, in squash, and in snooker. So it was such an incredible time to be a young Pakistani, and it was a time of so much hope. And then obviously we'll talk about the pain that comes later with the other World Cup, but we'll always have this memory, and I think it's wonderful. आज भी बच्चे वो टूर्नामेंट देख के, वो मैचेस देख के, वो फाइनल देख के इंस्पायर होते हैं. मोहम्मद आमिर बात करते हैं कि उस मैच को मैंने देखा, वो पैदा भी नहीं हुए थे तब. शाहीन अफरीदी बात करते हैं, हारिस रऊफ बात करते हैं कि हम वकार भाई की हाइलाइट्स देखते हैं. तो it's something that serves as a reminder of the power of sport. And as a Pakistani, to this day, it remains the greatest sporting achievement. And I really hope we get to see another one in our lifetime, inshallah. So no wonder we are still biased about these jersey. We are still biased about the World Cup trophy design, even though उसके बाद अच्छे कप आई हैं. But 92 का जो crystal वाली trophy है, it's hands down the best trophy ever. And the best song at any World Cup. I think उस जमाने में तो हमारे पास ना MP3 प्लेयर्स होते थे लाला, ना हमारे पास कुछ और होता था. टीवी से हम उसको अपने टेप पे रिकॉर्ड करके बस सारा वक्त जब हम अपने ग्राउंड में खेलते थे, कहीं जाते थे. एंड आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी को उस एरा के बच्चे को पकड़ ले, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट हमिंग द वर्ल्ड इज कमिंग डाउन. उसको अगले को ऐसे लिरिक्स आते हैं जैसे उसके चाचे ने लिख के भेजे. जस्ट द बेस्ट वर्ल्ड कप. शायद आपको याद हो, इसका एक उर्दू वर्जन भी बना था, दुनिया में देखा गया परचम अपना हाथों में. बिल्कुल. सो फॉर अभी आपसे बात करते कहते मुझे ख्याल आया, एक्सक्लूसिवली आपको इस पॉडकास्ट के एंड पे वो सॉन्ग मिलेगा. वो मेरे पास कैसेट में था, उसको मैंने कन्वर्ट करवाया, अब वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है. आई वाज थिंकिंग वन डे आई रिलीज इट. सो हम इस एपिसोड के एंड पे आपको इंग्लिश एंड उर्दू बोथ वर्जन्स सुनाएंगे, जिसके अंदर बाय द वे पाकिस्तान जब ये टीम वापस आई थी तो इनको जो ट्रक के ऊपर लेके जाया गया था उसकी भी हाईलाइट्स हैं. सो इंटरेस्टिंग बिट टुवर्ड्स द एंड. अच्छा, एक और जो है वो मुझे उस्मान भाई की बुक से उस मोमेंट का अंदाजा हुआ कि उन्होंने कहा जी एक मोमेंट है, भी मैंने उसका क्लिप ढूंढा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. बस जावेद मियांदाद और इमरान खान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, बट एट द सेम टाइम इख्तलाफात कह लें, डिसएग्रीमेंट्स भी थे. दे वर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट स्टाइल जिनका था लीडरशिप का. वो मोमेंट अक्सर अब आपको मिलेगा क्लिप. उसमें ये है कि इमरान खान जा रहे हैं, उनको पानी की बोतल देता है, वो बोतल पकड़ते हैं, बोतल पीते वो जा रहे हैं पानी की. पीछे से उनके कंधे पे कोई हाथ रखता है, तो वो थोड़ा सा अब इमरान खान को टच करना फ्रैंकली इतना थोड़ा सा आसान नहीं है. तो कहते हैं टेढ़ा है गए, तो पीछे मियांदाद है और वो उनको कहते हैं लग जा गले. और वो फिर दोनों एक बड़ी ही पुरजोर और बड़ी प्यारी किस्म की वो हक करते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट, जो मैं हमेशा लोग कहता हूँ कि यार वो क्लिप ढूंढ के वो क्लिप देखो, बहुत प्यारा क्लिप है वो.
मेरे लिए हमाद लाला दैट मोमेंट ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ पर्सनल सिग्निफिकेंस. उससे थोड़ा सा पहले आप देखते हैं कि handsome man run onto the field, he's holding a camera. वो मेरे ताया हैं, नवाब आशिक हुसैन कुरैशी मरहूम. And he went to the final, he went to cover the final. And he's one of Khan Saab, he was one of Khan Saab's oldest and dearest friends. उन्होंने शौकत खानम के लिए बहुत सारा काम किया, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारा काम किया, उन्होंने खान साहब के बहुत साथ दिया, और उनका क्रिकेट में जो लोग उनको जानते हैं स्पेशली, उनकी क्रिकेट के लिए लातादाद सर्विसेज हैं, तो वो उनको जाके मिले. और मुझे याद है मैं 10 साल का था. And I just started going crazy, telling, pointing at the screen and telling my grandfather and my father, चाचा जी. तो वो मेरे लिए एक और ज्यादा स्पेशल मोमेंट पर्सनली, उनको देखते और उसके फौरन बाद जिस तरह जैसे आपने एग्जैक्टली कहा, मियादाद साहब आके जब खान साहब की जो स्माइल है, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द Yes. लास्ट टाइम ही स्माइल्ड एट मियादाद साहब, बिकॉज उसके बाद उनकी दोनों की किताबों में एक दूसरे की, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट अ मोमेंट दैट समड अप what a feeling that was. जिस तरह वो दूसरे को मिले, there was relief, there was happiness, there was Mutual joy, respect. mutual respect, and also a feeling that they were able to put their differences aside when it mattered, because final में उनका stand ना होता और उनकी ये bravery ना होती तो इतनी एक young team आगे ना जा सकती. So absolutely, I think just that was a moment that, उसके बाद obviously बड़ी बातें होती हैं. मियादाद साहब कहते हैं खान साहब ने मेरी कप्तानी नहीं चलने दी, उनको ये था वो था. But at that moment, I think it was Pure a joy. moment of healing for Pakistan. Yes, Lala. yes. It was a अच्छा, moment इसमें of healing. जब बात हो ही रही है बिफोर यू रैप अप, बट मियादाद का जो रोल है वो 92 के वर्ल्ड कप में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह हमें पता है खान साहब बहुत एक सीनियर बंदे थे और ऑब्वियसली कैप्टन थे, और उनकी पर्सनैलिटी भी हमेशा से ऐसी रही है. आजकल पॉलिटिक्स में भी उन पे क्रिटिसिज्म आता है कि वो बहुत अवामी आदमी एक तरह के नहीं थे. इट वाज नॉट इजी टू कम्युनिकेट टू हिम. No, सो no, he's मियादाद वाज very द गो टू गाय. जिसने yes. बात करनी थी वो पहले वो जाता था. वो सख्त अब्बा और अम्मा होते हैं ना, तो अब अम्मा के पास जाते हैं कि जरा अब्बा नाल गल करो. तो वो बड़ा And इंपॉर्टेंट रोल था उनका. वो भी, and second, उनका tactical role बड़ा important था. Over the years, this is something Wasim bhai has spoken about, Waqar Yunus has spoken about, and all of them have said that tactically he was the only one who had, उनमें वो था कि वो खान साहब को आके कहते थे फील्ड चेंज करें, या इस बॉलर को लेके आए, इसको ऐसे करें, एंड खान साहब उनकी एडवाइस लेते थे, which is something आजकल भी जो खान साहब को क्रिटिसिज्म आता है कि वो सबकी नहीं लेते. तो he trusted in his cricketing instinct. And he was a very important player. And let's not forget that he'd been off the field for a large part because उनकी stomach line inflammation हुई थी. And Ramzan का महीना था. The Pakistan players were fasting when they weren't playing. So altogether it was just, as we all know, बहुत दफा बुजुर्ग बताते हैं कि जी 47 में जब पाकिस्तान बना था तो रमजान था, जुम्मे का दिन था. तो 92 में भी जब पाकिस्तान जीता था, it was, I think, सारी अवाम का फोकस उस पे था, and they were all doing that, and definitely it was for Khan Saab an incredible end, but it was also deserving for people like Javed Miandad, Wasim Akram, Moin Khan, before his fixing issues, Salim Malik, all of these guys to be world champion, and then it went on to change so many other lives. Wasim Haider Bhai, Iqbal Sikandar, these guys got Zahid Fazal, जिनका करियर बहुत जल्दी खत्म हो गया था, unfortunately. They get to be world champions, and it's something nobody can ever take away from them. बिल्कुल. और इसके जिस तरह हम बात करें क्लास ऑफ 92 ने आगे क्या किया, जो कि नेक्स्ट एपिसोड है, जो कि इतनी जॉली प्रॉब्ली नहीं होगी, बट उसमें जो नेक्स्ट 96 99 में इस टीम की जो कोर थी वो आगे लेके चली में गुड 10-15 years, एंड दैट जस्ट शोज कि जिन लोगों पे आपने खान साहब ने स्पेशली इन्वेस्ट किया था 1992 उस एरा में स्टार्ट के ऊपर, उन्होंने कितना आगे खेला. सो आई नो आपके भी अपने पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, मेरे अपने पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, बहुत से लोगों के अपने पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, बट इट्स रियली सैड एंड इट्स डिसऑनेस्ट अगर आप अपने पॉलिटिकल हेट्रेड या अपने पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से ये कहें कि खान साहब इज नॉट द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान has ever produced. I personally believe that. I will always stand by that. Wasim Akram is probably the only guy that comes closest to that, but no, in the end it's only Imran Khan. It is. And I think he's not just the greatest cricketer Pakistan has produced. Imran Khan has a serious case for being the greatest cricketer of all time. देखें, Sir Donald Bradman अपनी जगह पे हैं, Gary Sobers, Vivian Richards, one can say in later years, Shane Warne, obviously Wasim Bhai. But Imran Khan, for what he gave to Pakistan cricket, not just the runs and the wickets. Let's not forget Hamad Lala, he was struck down in his prime as a bowler. And he was definitely deserved to be the first bowler to 400 wickets.
to reinvent yourself and come back as a batsman who averaged over 50 after that. Yes. Imran Khan ki jo peaks thi, when he was the best bowler in the world, there was nobody to match him. He was averaging 25. His strike rate was phenomenal. He was cut down in his prime after a series where he took 42 wickets against India on the dead wickets of Pakistan. And then to come back and reinvent yourself as a batsman and spend the next 10 years averaging 50 plus as a batsman and a captain, it just goes on to show you. And उस injury के बावजूद 87 में he was one of the leading wicket takers at the World Cup. So आपको खान साहब ने जो अपनी सीलिंग थी उसको इतना पुश किया और उस पर इतना डिलीवर किया that आज अगर आपके ना सिर्फ लोग इंस्पायर होते हैं टू बी फास्ट बॉलर्स because of him, they inspire to be better cricketers. It's a legacy that's unmatched. And बिल्कुल मैं ये जरूर कहूंगा, anybody who's watching this who's read knows politically whatever the differences are, you cannot doubt Imran Khan's legacy as Pakistan's greatest captain, as Pakistan's greatest player, and easily as one of, if not the greatest cricketer ever produced. And मैंने एक बात बड़े लोगों से सुनी है कि उनमें टैलेंट इतना नहीं था भाई. अगर टैलेंट नहीं था तो उनको और भी ज्यादा अप्रिशिएट करो, बिकॉज उनका हार्डवर्क जो था, जिस सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन से उन्होंने अपने आप को उस लेवल का प्लेयर बनाया. Let's not forget he debuted in 71. But it wasn't against Australia in Sydney till 77 that he was, and that was from years of playing county cricket, from years of working. एक stump पे bowling करना, the fitness, managing all of that and having the success that he did. So absolutely, I echo everything you're saying, Lala. You can have whatever differences you want to have with him, politically or personally. You cannot doubt his legacy. And just to add with last bit, he was competing with Jeff Thompson for being the fastest bowler in the world at one point. Yes. So अगर आप बात करते हैं शेयर पेस की बात करते हैं, आई रिमेम्बर आप लोग बात करते हैं कि शुएब अख्तर तेज थे, वकार यूनुस तेज थे. शुएब माइट बी द फास्टर वन, बट कंसिस्टेंट अगर आप देखेंगे तो वकार भाई का जो करियर है वो कहीं ज्यादा है अगर आप सिर्फ पेस पे चले. वसीम भाई स्विंग, Imran Khan was all of this, and he was a good batsman, and above all, he was a great skipper. So you can't have a better package. So it's very fitting that Pakistan won the World Cup under his leadership, and I hope we 1992, and I hope we won it again in 2023, 2027, 2031. But 1992 for a lot of people like me and Lala will be probably our favorite tournament forever. Sir, thank you so much for joining. It's our longest episode so far, but it deserves to be. अब आप हमारा वो सॉन्ग एंजॉय करेंगे पाकिस्तान का जो डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश एंड उर्दू में, both versions. So that's an exclusive for you. But next episode won't be that cheery, unfortunately. That's why we're getting it all out today. सारी खुशियां आज निकाल रहे हैं, because अगले वाले में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होंगे और हम दोनों यूं बैठे होंगे, because वो दर्दें भी आज तक नहीं. Yes. So 1996, 1999 अगला डिस्कस करेंगे. Until next time, खुदा हाफिज. अपने उठाया हमने आलमी का दुनिया की जान फिर कितनी शान सारी दुनिया को है जिस पे ना दुनिया के हुक्मरान पाकिस्तानी की दुनिया ने देखा है यार परचम अपना हाथों में अपने उठाया हमने आलमी का दुनिया की जान फिर कितनी शान सारी दुनिया दुनिया के हुक्मरान पाकिस्तानी के मर्दे मुजाहिद है इमरान कप्तान अपना रख में डाला जिसने सारी दुनिया को सदियों के बाद रहेंगे यार इन ज़माने मकरमुशान अपनी है दिलो जान पाकिस्तानी की मर्दे मुजाहिद है इमरान कप्तान अपना रख में डाला जिसने सारी दुनिया को सदियों के बाद रहेंगे यार इन ज़माने रब्बी है दिलो जान पाकिस्तानी के
कर दिया जिसने साबित मैं ना दिखाई दे मारी मैदान देखे जहां ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं अरे वतन की सजा पाकिस्तानी की शारजा का हीरो मियां था सुपर स्टार कर दिया जिसने साबित मैं ना दिखाई दे मारी मैदान देखे जहां ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं पहले वतन की सजा पाकिस्तानी की ये खेल अपना रखते थे कि हमें मातम ट्रॉफी के साथ सबको मत सारे एशिया तक किया उनका नाम इसकी तर्जुमान पाकिस्तानी की एलन बॉर्डर में लिया मान ये खेल अपना रखते थे कि हमें मातम ट्रॉफी जो हम पे हुआ सबकी दुआओं का नतीजा ये वर्ल्ड कप सबसे है यार इस सबका ताज मिला पाकिस्तान को ये दान हिम्मत का है निशान पाकिस्तानी की खुदा का ये है ऐसा जो हम पे हुआ सबकी दुआओं का नतीजा ये वर्ल्ड कप सबसे है यार इस सकता मिला पाकिस्तान को ये दान हिम्मत का है ये निशान पाकिस्तानी की